Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on KVS PGT English Literature exam. Today is the third class and today we will discuss another poem, that is My Mother at 66 by Kamala Das. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 3 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. Good evening, Elena. Welcome. These are the timings of your classes Monday to Friday at 8:30 p.m. Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Okay, so let's start. Today we will talk about a new poem from the syllabus of class 12. From the syllabus of class 12, that is My Mother at 66 by Kamala Das. My Mother at 66 by Kamala Das. So first of all, a brief introduction to the biography of Kamala Das. As you all know, her full name was Kamala Suraya Das and she had a pen name called Madhavi Kutti. Generally, Kamala Das is famous as a confessional poet in the line of Sylvia Plath and Sexton and others. Das was born on 31st March 1934 in Punayurkulam in Malabar district. She was a South Indian woman. She was known as the Queen of Erotica. She spent her childhood in Calcutta, and the most important event in Kamala Das's life is her marriage with a much older man, Madhav Das, who was a bank officer. At the age of 15, she was married to Madhav Das, a bank officer. Good evening, Papdi. Welcome. She won Kerala Sahitya Academy Award for the story Thanuppu in Malayalam language, and her works was also shortlisted for the Nobel Prize. These are her major poetry collections: Sirens, Descendants, Summer in Calcutta, Old Playhouse, and other poems, 1973. Good evening, Ektaba. Welcome. So this is about Kamala Das's biographical details. Now, as we have already read in our NET syllabus, that maximum poetry of Kamala Das focuses on her traumatic life after marriage, and also in general the issue of women oppression, sufferings, and problems. In some of the poems like My Grandmother's House and others, Kamala Das also talks about nostalgia, her childhood experience. तो वेराइटीज ऑफ थीम्स उनके वर्क में है. ज्यादातर जो थीम हमें देखने को मिला है वो है फेमिनिज्म and the oppression of women. But this is a very different poem of Kamala Das. It is not talking about any oppression. Rather, you may say it is a discourse on the old age. ठीक है. हमने एक पोएम पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, दैट वाज अ फोटोग्राफ बाय शार्ली टॉल्सन. So it is also based on the theme of nostalgia and how an old woman is feeling after looking at her childhood photograph for many years. तो वो हमने देखा था in a photograph. Here in this poem there is no nostalgia, but it is a poem which is based on the anxiety of old age. एंजाइटी ऑफ ओल्ड एज. ठीक है, तो इसीलिए आप इस पोएम को कह सकते हो जेरोंटोलॉजिकल पोएम टू सम एक्सटेंट. जेरोंटोलॉजी जेरोंटोलॉजिकल पोएम. ठीक है. नाउ व्हाट इज जेरोंटोलॉजी? Gerontology is simply a branch of study. It is mainly a branch of anthropology where the main concept or the main theme is to discuss the issue related to old age.
ओल्ड पीपल के क्या क्या साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं, हाउ दे आर ट्राइंग टू कोप अप विद द सोसाइटी, हाउ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शुड बिहेव विद देम। तो ये एक बड़ा सा डिस्कोर्स है जिसको हम जेरोंटोलॉजी कहते हैं। तो दिस पोएम इज टू सम एक्सटेंट a gerontological poem as it is also focusing on the problems of old age। ठीक है, तो पूरा का पूरा नहीं है बट पार्शियली यू कैन कॉल इट अ जेरोंटोलॉजिकल पोएम। ठीक है, तो चलो अब डायरेक्टली पोएम के टेक्स्ट में आते हैं। वेरी शॉर्ट पोएम बट वेरी ब्यूटीफुली रिटन। देखो, दिस इज द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, हियर इज एन इमेज आल्सो गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो देखो पोएम स्टार्ट होता है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked। ठीक है, तो यहाँ तक सबसे पहले देख लेते हैं। तो द पोएट इज डिस्क्राइबिंग हर पर्सनल फीलिंग। ओके, so she is going to Cochin, she is returning back to Cochin from her parents home। तो उस टाइम में पोएट एंड हर मतलब हर मदर हैज कम टू सी हर ऑफ। ठीक है, तो वो फ्लाइट में जा रहे हैं। यहाँ पर देखो इमेज दिखा गया है, दिस इज द पोएट एंड दिस इज द मदर। ठीक है, तो मम्मी आए हैं उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट। तो ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me। At that time, the poet noticed her mother very carefully. Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse। Now, these lines indicate the physical change of old age, physical changes of old age। ठीक है, तो कैसा अपियरेंस है उनके मम्मी का? पोएट इज सेइंग दैट शी इज डोजिंग inside the car, she is dozing। so this dozing indicates that she feels very much tired and she is also very weak physically। ठीक है, देखो हम टायर्ड तभी फील करते हैं जब हमको बहुत वीक लगता है ड्यू टू मेंटल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर और एग्जॉशन। so we feel tired only because when we feel weak। ठीक है, तो डोजिंग सिग्निफाइज हर वीकेंड फिजिकल कंडीशन एंड ऑल्सो वीकेंड मेंटल स्टेट। So she is dozing open mouthed, and then the poet notices her very carefully. Her face ashen like that of a corpse। Ashen here means very much pale। Ashen means very much pale and bloodless in that sense। So it is very horrified. It is a very horrifying thing for the poet to see that her mother's face lacks the youthful glory or lacks the energetic vibe. Rather, she looks more like a corpse. So she is very much old, and her face just looks like that of a corpse। There is no blood, there is no proper beauty inside it। It looks very pale and very weak, full of wrinkles, full of wrinkles। Okay, so it is talking about that, those open mouths, her face ashen like that of a corpse। तो ये comparison बहुत ही significant है। Poet is directly comparing her mother's physical appearance to that of a corpse, though she is still alive। बट इसका इनर मीनिंग ये है कि पोएट इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट हर मदर इज गोइंग टू लिव नो मोर। ये पोएम के लास्ट में भी है, एंड में भी है, सेम चीजें। तो पोएट को अभी लगता है कि हर मदर इज लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स, शी इज टू मच ओल्ड टू सर्वाइव फॉर मोर। So her face looks very much pale and bloodless, and realized with pain. What is the poet's realization? That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन ऑफ थॉट, एक कॉन्ट्रास्टिंग थॉट वी कैन सी। तो the poet has realized with pain, so it is very much painful for a daughter to imagine that her mother is going to live no more। Okay, her mother is going to die very soon। So naturally, the poet is departing from her mother, she is going back to Cochin, and
Just at the moment of departure, the poet feels very sad to see that her mother is too much old. She was as old as she looked. ठीक है, उनका फिजिकल अपीयरेंस जितना वीक है वो उतना ही एज ओल्ड हो चुका है. So she is noticing that, and she has realized it with so much pain that she is going to be separated from her mother very soon. But that particular thought is very disturbing, very much destabilizing for her. So at the moment when she realized that her mother is going to die so soon, she naturally tries to put that thought away for the time being. ठीक है, एंड वो ग्रेजुअली अपने आप को वो कंसोल कर रहे हैं, इस थॉट से वो अपने माइंड को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग. दीज टू इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर देखो उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है. ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन contrast between youth and old age. Contrast between youth and old age, this is very prominent here. So the poet looks out from the car, and generally जो चीजें हमें नजर में आते हैं, she notices the young trees printing. So young trees means trees full of green leaves. ठीक है, जो फ्रेश ट्री है, यंग ट्री स्प्रिंटिंग. नाउ इट इज अ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल इल्यूशन कॉज टू आवर आईज. तो ये आप सबने एक्सपीरियंस किया है. वेन एवर वी लुक एट समथिंग स्टिल फ्रॉम अ मूविंग ऑब्जेक्ट, we always feel that those things, those objects are speedily running in the opposite direction. ठीक है, तो देखो जब भी आप ट्रेन में जाते हो या फिर कार में जाते हो, तो ऐसा लगता है कि जो भी घर है बाहर रास्ते के ऊपर, जो भी ट्रीज है वो उल्टे दिशाओं में रन कर रहे हैं, उल्टे दिशाओं में वो मूव कर रहे हैं. सो एक्चुअली इट इज एन इल्यूशन ऑफ अवर आई. ये रियलिटी में तो नहीं होता. दोज आर ऑब्जेक्ट्स, दोज आर स्टिल ऑब्जेक्ट्स, तो वो तो मूव नहीं कर सकते, बट इट इज एन इल्यूशन. Automatically as we are moving inside the train or inside a car, so automatically we feel that the trees are also moving in the opposite direction. So the same thing the poet notices, the young trees sprinting and merry children spilling out of their homes. A group of children, they are playing on the street, they are playing on the fields beside the street. So she has seen that. ठीक है, तो ये दोनों इमेज डेलिबरेटली पोएट ने इसीलिए मेंशन किया है टू हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट between the youth and the old age. So the poet's mother is old, she is sleeping inside the car, her face appears to be wrinkled like that of a corpse, and on the outside world we can see the young children, they are laughing, they are merrymaking. So it clearly shows that the children who can live a carefree life, they are not bothered about anything. But the poet's mother inside the car is overburdened with age, overburdened with duties and responsibilities. This is one line of interpretation. Second line of interpretation, आप ये भी कह सकती हो कि if the poet's mother die, जो जैसे poet imagine कर रहे हैं, अगर वैसे हो जाए, so it will not impact the outside world or the natural phenomena, right? Daily, so many people are dying all over the world, but it does not affect the flow of life. It does not have any impact on the movement of earth or the movement of civilization. लाइफ तो वैसे ही चलते हैं, जो लोग बीच में चले जाते हैं वो तो चले जाते हैं, बट gradually the life is moving on. Life has its own pace and it is continuing. The poet is also establishing the fact that her mother is old, she is feeling anxious, but that anxiety is not reflected on nature. Nature is moving, nature is celebrating its beauty in its own way. And children are also a very close part of nature. ठीक है, तो ये बात उन्होंने बताए हैं थ्रू दीज टू इमेजेस. अब यहाँ से एक पोएम और मुझे अभी याद आ रही है, आपने पढ़ा भी होगा शायद, एमिली डिकिंसन्स पोएम because I could not stop her death. They are also same kind of contrast she has given. ठीक है, तो उस पोएम में क्या था कि the poet is imagining, Emily Dickinson is imagining that she is already dead
and death has come in the form of a young lover with a beautiful carriage to carry her into the next world. ठीक है. अब जब वो डेथ के साथ जा रहे हैं उस कैरेज में, शी इज ग्रेजुअली पासिंग द यंग चिल्ड्रन, she is gradually passing the school, the field of gazing grain. Okay, so these things are associated with earthly lifestyle, but the poet is now away from all these things. She is beyond all these earthly phenomena. That is why she is just casually passing the beauty of setting sun, the beauty of the children playing in the school playground, the field full of grains, जो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उनको बहुत अट्रैक्ट करता था, आज वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज शी इज नाउ डेड. So here also Kamala Das is saying almost the same thing, highlighting the contrast between the young trees, merry children and the mother of the poet. अच्छा, नेक्स्ट क्या है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, तो ये तो जर्नी के दौरान उन्होंने बताया है. अब जब वो एयरपोर्ट में पहुंचते हैं, ठीक है, टू टेक फाइनल लीव, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. ठीक है. तो आफ्टर जैसे देखो हम जब किसी को सी ऑफ करने जाते हैं, तो up to the last moment of his or her journey we try to be with him or her. एकदम ट्रेन छूटने के टाइम तक हम उसके साथ रहते हैं, या फिर एयरपोर्ट में प्लेन छूटने के टाइम तक हम उसके साथ रहते हैं, राइट. सो पोएट्स मदर हैज कम टू सी हर ऑफ. आफ्टर सिक्योरिटी चेक द पोएट इज जस्ट गोइंग टू बोर्ड हर फ्लाइट. Before that, she looks back and she again notices her wan pale face. ठीक है, यहाँ पर देखो इमेज भी दिया है, her mother is too old. तो again the poet notices that pale face and उसको वो describe कर रहे हैं कि as a late winter's moon. Now this is very important. ये जो phrase है इसको आप ध्यान से पढ़ो, late winter's moon. तो moon तो in that sense very beautiful. And moon is also a symbol of completeness. Moon is called the queen of night, but it is talking about late winter's moon. So late winter's moon is not full moon, rather it is the half moon. ठीक है, half moon, और जिसको आप कह सकते हो कि क्रीसेंट, क्रीसेंट मून, इस टाइप का जो शेप होता है इसको हम कहते हैं लेट विंटर्स मून. तो जब नाइट स्काई में मून राइज करते हैं एट द इवनिंग, देन इट इज कंप्लीट. बट लेट विंटर के टाइम में, एट द एंड ऑफ द विंटर, वी सी द मून विच इज ऑल्सो अ वेरी फेड in color, and also a yellowish uh, glow is there, yellowish glow is mentioned there. Remember the description inside Frankenstein, जब मॉन्स्टर को क्रिएट कर रहे थे फ्रैंकेनस्टाइन, तो मेरी शैली ने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया था कि देयर इज नो लाइट, ओनली द लाइट ऑफ द येलो मून इज कमिंग थ्रू द विंडो. सो दैट येलो मून इज एक्चुअली लेट विंटर्स मून. ठीक है, तो ये बात उन्होंने बताया है इन दिस कंपैरिजन. Yes, it is a very beautiful poem by Dickinson. Absolutely right. So late winter's moon and felt, late winter's moon. So poet's mother's face is like that. It is not like a full moon. It is not like purely white or beautiful, full of romantic glory. It is not like that. It is like late winter's moon, which is very crescent in size, small in size. ठीक है. एंड ऑल्सो उसके जो व्हाइटिश कलर है वो विजिबल नहीं होते, ज्यादातर वो येलोइश होता है, डार्किश होता है. एंड द लाइट विच इज एमिटिंग फ्रॉम द लेट विंटर्स मून इज ऑल्सो वेरी पेल एंड ग्लूमी, फॉगी काइंड ऑफ लाइट. ठीक है. तो दैट इज वाई द पोएट इज कंपेयरिंग हर मदर्स फेस टू द लेट विंटर्स मून. एंड शी फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर. Old familiar ache. Old familiar ache means pain. So it is a very old and familiar pain, which means that the poet has felt a number of times that she is going to lose her mother very soon.
तो ऑटोमेटिकली ये तो एक फियर होता है हम सबके अंदर कि वी इफ वी ऑलवेज थिंक दैट वी आर गोइंग टू लूज आवर नियर एंड डियर वंस वेरी सून, then it will automatically create an anxiety. Anxiety of what? Anxiety of loss or a sense of void. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। जो पर्सन एकदम डेथ बेड में है उसके अंदर में तो एक फियर है कि आफ्टर डेथ व्हाट विल आई डू, but the person who is beside him or her at the time of dying, he or she will also feel the same anxiety that what will I do after his or her death. अगर वो पर्सन फैमिली के कोई मेन मेंबर है, मदर फादर और ग्रैंडफादर, जो कि फैमिली का हेड है, अगर उनका अचानक डेथ हो जाती है तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वॉइड, अ सेंस ऑफ discord also, and also a sense of confusion that what will I do after the death of this person. So the poet also feels that particular ache, that particular tension, जो बहुत ही पुराने हैं, बहुत साल पहले भी उनके दिमाग में सेम फीलिंग्स आए थे कि आई एम गोइंग टू लूज माई मदर सो सून। सो इट वॉज हर चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड फियर। बचपन से वो ये सोचते थे कि उनके मम्मी उनसे दूर ना हो जाए, एंड फाइनली दैट मोमेंट कम्स दैट हर मदर इज गोइंग टू डाई सो सून, सो देयर सेपरेशन इज इनएविटेबल, and it will be a separation forever. So the poet cannot bear this thought. She loves her mother so deeply. That is why she cannot accept the fact that her mother is going to die so soon. Yes, absolutely right, Papri. Half moon symbolizes here that her mother's life is going to end soon, as she is old like this old moon. Yes, absolutely. So felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. ठीक है, तो अब देखो कि जब हम किसी को सी ऑफ करते हैं तो जनरली वी से गुड वर्ड्स, राइट, वी ऑलवेज से दैट फिर मिलेंगे, वी विल मीट अगेन। तो दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड, ये बताना चाहिए व्हेन यू आर लीविंग अ पर्सन और अ फ्रेंड और एनी पर्टिकुलर पर्सन ऑफ योर एक्वेंटेंस। जब आप उनसे विदा लेते हो तो ऐसा नहीं कहते कि भाई फिर हम कभी ना मिले। So these things should not be said. You should say that okay, we will meet you again, see you soon, stay happy and blessed. These are common formal greetings, right? So the poet is feeling anxiety inside her mind that her mother is going to die so soon. लेकिन जाते जाते वो तो ये बता नहीं सकते कि मम्मी अब तो आपका लास्ट टाइम आ चुका है तो मैं क्या करूं। दिस थिंग शुड नॉट बी सेड, राइट, बिकॉज आफ्टर ऑल शी इज द मदर। तो पोएट एट द टाइम ऑफ डिपार्चर अपनी मम्मी को कह रहे हैं सी यू सून अम्मा, but it appears to be very ironical. The poet is saying, she see you soon, Amma, we will meet again. But she herself has a doubt that next time when she will come, whether she will be able to meet her mother in living condition or at that time her mother will die. ये उनके अपने अंदर ही एक डिलेमा चल रहे हैं, अपने अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। शी इज नॉट श्योर, बट स्टिल टू कंफर्ट हर मदर शी इज सेइंग दैट डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल सी यू सून, आई विल कम बैक अगेन, सो तब तक आप अच्छे से रहना। ये बात वो कह रहे हैं ताकि उनके मदर को भी ये एहसास हो कि माई डॉटर इज विथ मी ऑलवेज। And last line is very important. All I did was smile, smile, and smile. Now, why the word smile has been used repeatedly? रिपीटेडली यूज करने का यही कारण है कि द पोएट इज इन डेस्परेट अटेम्प्ट, द पोएट इज इन डेस्परेट अटेम्प्ट टू हाइड हर पेनफुल फीलिंग्स, टू हाइड हर पेनफुल फीलिंग्स। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप ये देखो, अक्सर हम बताते हैं कि जो पर्सन जितना हंसता है उसके अंदर उतना ही दुख होता है। वी ऑफन से इट इज अ प्रोवर्ब that the most smiling person can be the most saddest one or the most melancholic one. तो स्माइल का एक पर्पस होता है कि आप अपने जो भी मन में एक दुख है उसको छुपा लो एंड आप हंसो। तो स्माइल इज द काइंड ऑफ थेरेपी। एंड रिमेम्बर कमला दास has also used this element of smile कि जब वो एन इंट्रोडक्शन लिख रहे थे, या फिर in the poem the freaks also it is mentioned directly or indirectly that women has to smile, covering up all the anxiety, covering up all the problems, women must smile
because with her smile she can protect a family. तो ये एक ड्यूटी बन गया है कि women should not cry, women should always smile, suppressing all her emotions or all her anxiety, fear and problems. ठीक है, तो yes, to show her mama that she is all right, absolutely. So the poet is also trying to prove the same thing. She was smiling and smiling and smiling, continue to smile ताकि उनके मम्मी को एक assurance मिले कि no, my daughter is well and I must be alive to meet her again. So to hide her painful feelings, and she is just trying to drive away the thought of the permanent separation from her mother. That is why she is trying to smile. अब ये स्माइल स्पॉन्टेनियसली तो नहीं आ रहे हैं, वो फोर्सिबली स्माइल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके मम्मी को एक कंफर्ट पहुंचाए. Yes, the smile is a kind of mask behind which he has hidden her deep anxiety. It is a nostalgic poem depicting the most beautiful bond of the world, that is mother and daughter. So at the end of the poem, it reveals the emotions of insecurity of all daughters about the life of mothers. Very beautifully said, Papri. Absolutely right. It is talking about that. Yes, it is a very emotional poem. So we can link it with our personal life, right? तो इससे ये पोएम एंड होता है. वेरी शॉर्ट पोएम बट इट इज वेरी क्लियरली फोकसिंग ऑन द थीम ऑफ ओल्ड एज एंड हाउ ओल्ड एज ब्रिंग्स विथ लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली फॉर द ओल्ड पर्सन बट उसके आसपास में जो लोग होते हैं उनके एंजाइटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो टोटली इट इज टॉकिंग अबाउट द ओल्ड एज एंड इट्स प्रॉब्लम्स, बट ultimately the poet is trying to console her mother, which is considered the most important duty of a daughter. ठीक है, तो अल्टीमेटली वो लीव कर रहे हैं एंड यहीं पर पोएम एंड होता है. वी कैनॉट नो वेदर द पोएट कैन सी हर मदर अगेन alive or dead, but there is an indication that the poet's mother will die soon. तो एंड मम्मी के एज भी यहाँ पर मेंशन है. देखो, माय मदर एट 66, जैसे पोएम का टाइटल मैंने बताया, माय मदर एट 66. So at the age of 66, the poet is feeling that her mother is very getting very old and she is going to leave the world very soon. Yes, absolutely right. It is a beautiful poem. Basically, CBSE का जो syllabus है ना, CBSE class 11 and 12, there are so many beautiful texts which are included in this particular books. बंगाली मीडियम के हमने जो सिलेबस पढ़ा था at our class of 11 12, not so beautiful texts are given, but यहाँ पर famous authors भी है, unknown authors भी है, but the texts are really amazing and enriching. जितना हो सके I will try to teach you, because literature में आपको काम तो जरूर आएगा ही. It is not that in your net exam it will not help you. Definitely it will help you, because जितना text आप पढ़ोगे उतना ही आपके अपने enrichment है. So it's a very beautiful text. Right now I am uh, uh, teaching you only the poems, but prose works भी बहुत अच्छा है. ठीक है, नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई टू ब्रिंग द प्रोज वर्क्स ऑल्सो. प्रोज वर्क्स के डिटेल समरी, उसमें हिस्टोरिकल वर्क्स है, एडवेंचरस वर्क्स है, टॉकिंग अबाउट द other things, talking about untouchability, caste division, social problems, poverty. तो सब कुछ चीजें बहुत अच्छी तरीके से मेंशन है एंड इट इज अ ब्यूटीफुली प्लान्ड बुक. आई थिंक जो सिलेबस दिया हुआ है वो बहुत अच्छा है एंड द टेक्स्ट्स आर रियली अमेजिंग टू रीड एंड टीच ऑल्सो. ठीक है, तो देखो अब तक हमने 3 पोएम पढ़ा है, 3 पोएम्स पढ़ा है. 3 पोएम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है. Laburnum Top is a different poem, a photograph is a different poem, and here it is talking about an emotional setup, right? Okay, so yes, Papri, it is a very unstable age. Death can appear anytime. Yes, so that is for today's class. That is about this poem. So in the next class, we will talk about some another interesting lesson.
That is for today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. These are the timings of your classes, Monday to Friday at 8:30 p.m. So tomorrow at 8:30 p.m. we will meet again. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Okay, so thank you all. Bye bye everyone. Good night. See you all tomorrow at 8:30 p.m.